कभी आपने ये सोचा है कि अगर अपन ने चम्मच के इनर साइड में देखा तो अपन खुद की इमेज उल्टी क्यों देखते हैं? या कभी ये सोचा है कि हेडलाइट्स रहेंगे, अपने टॉर्चेस रहेंगे, इनके रेज पैरेलली कैसे निकलते हैं और हाउ कैन दे कवर सो मच एरिया विद अ ब्राइट लाइट? दीज आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. अपन जब हेडलाइट्स और टॉर्चेस की बात कर रहे हैं, दीज आर वेरी थॉटफुल applications of concave mirror. Welcome to today's lecture where we are going to see ray diagrams for concave mirror. Before going into the image formation of concave mirror, we need to understand certain rules for the image formation of concave mirror. The first rule of the concave mirror is that when the ray is parallel to principal axis, after reflection, it is going to pass through focus. I'll repeat myself. When the incident ray is parallel to principal axis, after reflection, it is going to pass to principal focus. और इसकी जो normal रहेगी, that will pass to center of curvature. Now it is going to follow the laws of reflection, that is angle of incidence is going to be equals to angle of reflection. So what the statement is going to be? A ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror. Now, the second rule for the image formation is vice versa for the first rule. Now, what will be the vice versa? If the incident ray is passing through focus after reflection, it will be parallel to principal axis. Again, the normal is going to be through the center of curvature. Here also, the angle of incidence will be equals to angle of reflection. If you carefully see the figure, even though the figure is almost same, the arrows are pointing at a different direction and angle of incidence and angle of reflection have interchanged. So when we are writing the second rule in terms of word, वो ऐसा रहेगा. A ray passing through the principal focus of a concave mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. Now we will move towards the third rule for the image formation of the concave mirror. The third rule is when the incident ray is passing through center of curvature, after reflection, it will bounce back along the same path. I'll repeat myself. If the incident ray is passing through center of curvature, after reflection, it will bounce back along the same path. Now, why does that happen? होता क्या है कि अपन ने previous slide में देखा, the normal is always drawn from the center of curvature. It means that the incident ray is passing along the normal, and because of that, the angle of incidence becomes zero, and following the laws of reflection, the angle of reflection is also zero. Because of that, it is going back along the original path. इसका मतलब है जिस गली से आए थे उसी गली हमको वापस जाना है. Now we will move towards the fourth rule, that is when the incident ray is incident obliquely at the pole, it will also reflect obliquely. It means, or what does it mean by obliquely? See, any angle other than 0 or 90 degree is called as an oblique angle. इसका मतलब है अगर ये इंसिडेंट रे यहां पे कोई भी एंगल बनाता है अदर देन 0 और 90 degree, it means that it is going to follow the laws of reflection and angle of incidence is going to be equal to angle of reflection here. Now we will move towards the actual image formation in a concave mirror. अपने को चारों में से कोई भी दो रूल चाहिए जिससे अपन इमेज बना सकते हैं. तो पहले जो इमेज फॉर्मेशन है that is when the object is kept at infinity. Now this is your concave mirror where focus, principal axis, pole and center of curvature are located. When we are talking about object at infinity, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है मिरर से. तो याद रखना जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर रहेगी,
the incident rays are always going to be parallel to principal axis. This you need to remember throughout this chapter. Again I'll repeat myself, जब भी object infinity या बहुत दूर रहेगी, incident rays are parallel to principal axis. But what does the first rule say? That if the incident ray is parallel to principal axis, after reflection, it is going to pass through focus. So all the rays are going to converge at focus. Now, if the rays are going to meet at focus, इसका मतलब है जो भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे थी उसका जो इमेज है वो बनेगा फोकस पे. You can see that all the rays from all the points of the object are meeting at a single point, that is focus. So what the image nature of image is going to be? As the rays are actually meeting, it means that it is a real image. The real image is always going to be inverted, and this is going to be highly diminished or point size image. So whenever an object is kept at infinity, the image is going to form at focus, and the nature of image is going to be real, inverted, or highly diminished or point size. Now we will see the second image formation in a concave mirror when the object is kept beyond C. Remember, in a mirror, P is always going to be origin. इसका मतलब है all the distances will be measured from P. That is why when we are talking about beyond center of curvature, it will be this region. अभी मैं एक ऑब्जेक्ट लिए AB which is kept beyond C. A will be the head of the object, B will be the tail of the object. अपन ने चार रूल्स देखे हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए. अपने को कभी भी दो रेज लगते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, सो वी कैन यूज एनी टू ऑफ द फोर रूल्स. मैंने कन्वीनियंस के हिसाब से पहला रूल लिया, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द फर्स्ट रूल सेज इट विल पास थ्रू फोकस. नाउ second rule, I can take through center of curvature, I can take through focus, or I can take through pole. For convenience purpose, मैंने center of curvature से लिया. So when the incident ray is passing through center of curvature, the rule says it will bounce back along the same direction. So यहाँ पे अभी ये दोनों meet हुए, the rays have actually met there, so image will be formed there. It will be like this, A dash, B dash. अपन देख सकते हैं कि रेज एक्चुअली फॉर्म हुए वहां पे और मीट हुए वहां पे, तो दिस इज गोइंग टू बी रियल इमेज. वी कैन सी फ्रॉम द रे डायग्राम द इमेज इज इन्वर्टेड. ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर देयर इज अ रियल इमेज, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इन्वर्टेड इमेज. अगर अपन ने साइज कंपेयर की तो ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज इमेज के साइज से बड़ी है. सो वी कैन से दैट द साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश्ड compared to the object. So when we are talking about nature of the image, we can say that the nature of image is going to be real, inverted, and diminished. What is the position of the image? That it is going to form between focus and center of curvature. अभी मैंने convenience के लिए center of curvature से रे लिया था. If rather than center of curvature I take it through focus, you can see from the diagram that it is going to pass through the same point if your dimensions are correct. You don't need 3 rays, you only need 2 rays. So आप कोई भी दो ले सकते हो. Either you can take center of curvature and parallel वाला ray, or you can take parallel वाला ray and through focus. It is up to you what is convenient to you. Now we will move towards the next ray diagram when the object is kept at C. So when the object is kept at C, that is AB, again we need to use two rules. First ray, when the incident ray is parallel to principal axis, after reflection it will pass through focus. और दूसरा रे अभी अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं ले सकते, तो अपने पास अभी दो ही रूल बचे. आइदर वी कैन टेक इट थ्रू फोकस और यू कैन टेक इट थ्रू पोल. पर पोल के लिए इशू ये है कि यू नीड टू मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो अपन क्या करेंगे, फोकस से लेंगे. सो व्हाट डज द रूल से? व्हेन द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अपन अभी डायग्राम से देख सकते हैं कि इमेज कहां पे बनी, एट सी पे ही बनी. ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो इमेज भी कहां पे बनी, सी पे बनी. ए डैश बी डैश इज योर इमेज. सो द रेज आर एक्चुअली मीटिंग अगेन, सो द इमेज इज गोइंग टू बी रियल.
अगेन इफ द रियल इमेज इज देयर इट इज बाउंड टू बी इन्वर्टेड, और अगर साइज का कंपेयर किया तो ए बी और ए डैश भी सेम ही है. So the nature of the image in this particular ray diagram is going to be real, inverted and same size, and the position of object is going to be at center of curvature. Now the issue while making this ray diagram is that the position of image is exact, और अगर अपन अपने डायमेंशंस करेक्ट नहीं है तो प्रॉब्लम ये होगा कि एट सी पे अपने को इमेज नहीं बनेगी. तो उसके लिए एक शॉर्टकट बोलता हूं कि अपन ऐसा एक मिरर निकाल लेंगे, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे, पोल ये करेंगे, एक सेफ डिस्टेंस लेंगे, वहां पे अपन एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे ए बी, और उसके नीचे ही अपन क्या करेंगे, इमेज ड्रॉ करेंगे उतनी ही हाइट की, दैट इज ए डैश बी डैश. तो अपन दो रे लेंगे, दोनों पैरेलल लेंगे और इनके एंड्स जो है वो ज्वाइन कर लेंगे. सो जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को मीट हो रहे हैं वहां पे अपन फोकस रख लेंगे, ये पोल है, और जहां पे ऑब्जेक्ट रखे अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर. बाय दिस मेथड तुम लोगों को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता वेदर द पोजीशन इज गोइंग टू बी एग्जैक्ट और नॉट, और एग्जामिनर को ये भी पता नहीं चलेगा कि बाबा तुमने पहले रेज ड्रॉ किया है, तुमने पहले इमेज ड्रॉ की है. सो आवर पर्पस इज फुलफिल, रिमेंबर दैट. Now we will move on to the next image formation, that is when the object is kept between F and C. So when you are keeping the object, it is going to be between this region, this region. So when we are talking about this region, it is between F and C. मैंने object AB ली, that is kept between F and C, AB. Now मैंने पहले ही बोला कि अपने को रेज के लिए, इमेज के लिए कितने रेज लगते हैं, दो. तो मैंने पहला रे ले लिया, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अगेन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल इट इज बाउंड टू पास थ्रू फोकस. नाउ सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने क्या किया, आई कैन टेक इट थ्रू फोकस और आई कैन टेक इट थ्रू पोल. पर मैंने पोल का इशू पहले ही बोला है, यू नीड टू मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसलिए मैंने क्या किया, आई हैव टेकन द रेज थ्रू फोकस, सो द रूल सेज इट शुड गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सो योर rays have reflected rays have met here, so अपनी image वहां पे बनेगी a dash b dash. Rays actually met beyond center of curvature, so we can say that the image is formed beyond center of curvature when the object is kept between F and C. You can see that when the object was kept beyond center of curvature, image was formed between F and C, and when the object is kept between F and C, the image is formed beyond C. तो ये vice versa हो गया. अगर अपन ने साइज को कंपेयर किया तो ए बी ऑब्जेक्ट की साइज और ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट की साइज में इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, सो वी कैन यूज द वर्ड एनलार्ज. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड हियर, इट इज गोइंग टू बी रियल, inverted and enlarged, and the position of image is going to be beyond center of curvature. I hope you have understood this. We will move on to the next image formation, that is when the object is kept at F. So अपन ने concave mirror ले लिया और वहां पे F पे अपन ने एक ऑब्जेक्ट रखी AB. अभी अपने को इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे रखते, तो अपन ने पहला रे ले लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज पासिंग थ्रू फोकस. नाउ दूसरा रे आई कैन टेक इट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल. इफ मैंने एट पोल के लिए लिया तो अपना फोर्थ रूल क्या कहता है, व्हेन द इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द पोल, इट विल रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली. Even if I take the ray along the center of curvature, it is going to bounce back along the same direction. You can take these two rays or these two rays. These rays are parallel to each other. Now mathematics say that parallel lines will not meet, but these are actually physical phenomena, that is rays. So we assume that they are going to meet at infinity. So if they are going to meet at infinity, the image formed there, if they are actually meeting, so the image is going to be real, inverted and highly enlarged. It is going to be very enlarged, but we will not be able to see it on a screen. That is the main advantage of real image. In this particular position अपने को इमेज कभी भी स्क्रीन में नहीं मिलती है.
Now we will move on to the final image formation, that is when the object is kept between pole and focus. Now children, remember, this is the difficult diagram in image formation of a concave mirror. So listen carefully, observe carefully. This is a concave mirror. I'm going to keep an object AB between F and P. अपने को इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे लगते हैं, बट यहाँ पे अपन पैरेलल इंसिडेंट रे नहीं ले सकते क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद बीच में तुम्हारा ऑब्जेक्ट आ रहा है. So what we will do, we will take the incident ray at pole and along the center of curvature. So according to the fourth rule, when the incident ray is incident obliquely at the pole, it will reflect obliquely. And for the second ray, when the incident ray is directed along the center of curvature, it will bounce back along the same path. अभी दिक्कत क्या है? In this region, they are going away from each other. So they are not going to meet anywhere in this particular region. So the image will not form there. So what do we need to do? We need to extend the rays behind the mirror. So मैंने rays को extend किया, दोनों rays को extend किया, तो अपन ने observe किया कि वो यहाँ पे meet हो रहे हैं. So image वहां पे form होगी. But अभी यहाँ पे क्या है? Rays are not actually meeting. अपन ने जब extend किया तब अपने को दिख रहा है कि बाबा rays meet हो सकते हैं पीछे. तो इसीलिए यहाँ पे जो इमेज बनेगी that is going to be virtual. और virtual इमेज कभी भी इरेक्ट रहती है. अगर अपन ने साइजेस को कंपेयर किया तो ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो इमेज के साइज से छोटी है. So we can say that the image is enlarged. So in one go we can say that the nature of image is virtual, erect and enlarged. The position of image is going to be behind the mirror. So again I'll repeat, when the object is kept between F and P, the image is formed behind the mirror and the nature of image is going to be virtual, erect and enlarged. I hope that you have understood this particular image formation. Now we'll see the applications of concave mirror in our day-to-day life and how do they make our life easier with their properties. Now, सबसे पहला application है, these are used as a makeup mirrors. So generally makeup mirror में क्या होता है कि अपने को makeup के लिए magnified image चाहिए. So that is why when the object is between pole and focus, the image we get is magnified and erect. So it helps in the grooming or for the personal grooming task. The second application is these are used in headlights and flashlight. होता क्या है, जब अपन ने देखा कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहता, तो फ्लैश लाइट और हेडलाइट में क्या होता है कि जो तुम्हारा लाइट है it is kept near the focus. So whatever light they are emitting, all the rays are coming from the focus. So after reflection, the rays will go parallel to principal axis, or they helps us to create a beam of light, a concentrated and powerful beam of light. The third application is dental mirrors. आप लोगों ने अगर बचपन में बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाए तो you must be very frequent visitor of dentist. तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, टू गेट अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ योर टीथ, द डैमेज टीथ, दे यूज कॉनकेव मिरर्स. अगेन they use the particular property when it is kept between pole and focus, we get an enlarged image. So oral cavities exam करने के लिए concave mirror बहुत help करते हैं. Then ophthalmoscopes. So generally ophthalmoscopes में क्या होता है, जो eye का interior structure अगर देखना है उसके लिए concave mirror अपने को help करते हैं. These are also used in solar furnaces. Now what is a furnace? Basically furnace is a place where we create a lot of it to convert generally water into steam. So in a solar furnace, large concave mirrors whose diameter are more than 100 meters are installed. So whatever sunlight is incident on them, according to the first ray diagram, it is going to converge at the focus. So all the rays apparently from all the surface will converge at the focus, and it will be that heat will get concentrated and it will generate higher temperatures there. Then there are projector systems. We use this particular concave mirror in projector system to direct and focus the light into the projector screen. The last but not the least use is telescope.
जनरली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कॉनकेव मिरर को मैक्सिमम लाइट गैदर करने के लिए और क्लियर इमेज ऑब्टेन करने के लिए हेल्प होता है. देयर इज ऑल्सो न्यूटोनियन टेलीस्कोप, वहां पे भी ये हेल्प करते हैं. थैंक यू. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस. Please watch it and give us feedback how we can make this video better and more clearer for your understanding. Thank you.